my channel, and today I'm going to share with you my traditional earring collection. See, heavy and traditional jewelry या तो खुद के शादी में पहनते हैं या फिर किसी और के या फिर कोई स्पेशल ओकेजन या फिर इवेंट हो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि यार कैसी ज्वेलरी पहने, क्या वो हैवी होनी चाहिए या फिर कॉन्ट्रास्ट या फिर मैचिंग सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे लगे। ये आपके साथ भी जरूर होता होगा। सो डोंट वरी, today I'm going to share with you some of the styling tips also that आपको कौन से आउटफिट पे किस टाइप की ज्वेलरी पहननी चाहिए एंड मोर पर्टिकुलरली किस टाइप के इयररिंग्स पहनने चाहिए। So let's begin. But before starting, if you are new to my channel, do like, share and subscribe. Okay, so these are my first pair of earrings. As you can see, ये कुंदन के हैं and it just have a simple gold plated kind of thing over here. And ये बहुत ही ज़्यादा light weighted है, बहुत ही ज़्यादा। Now, these earrings are a bit kind of two in one. टू इन वन इसीलिए क्योंकि ये इयररिंग्स को आप एज अ इयररिंग्स भी वेयर कर सकते हो या फिर यू कैन जस्ट हैव दिस एज योर मांग टीका। ओके, फर्स्ट आई विल शो यू एज इयररिंग एंड ये ज़्यादा हैवी भी नहीं है, दीज आर रियली लाइट वेटेड बिकॉज मैं खुद भी यूजुअली हैवी इयररिंग्स पहनती नहीं हूँ। इयररिंग्स ऐसे चूज करने चाहिए कि जो दिखे हैवी बट होनी चाहिए लाइट वेटेड। ओके, नाउ एज यू कैन सी दिस इज आर रियली रियली प्रिटी। तो मोस्टली ऑन सच इयररिंग्स go with the hairstyle of tied hairs. Okay, something like bun kind of thing. And here are the third ones. I'm sure you are going to love this because it is something different in style. आपको मैं वेयर करके बताती हूँ। There is no need to wear any neck piece also. इस टाइप के इयररिंग्स पे नेकलेस पहनने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है because they are the center of attraction and it covers your ear very very nicely. It gives a very nice look. Now the next pair are really cool one. Okay, these are like quite a bit heavy, थोड़े से heavy है and usually such type of earrings जो इतने heavy होते हैं and they have the झुमकास at the end, these are to be preferred on lehengas. ठीक है, इस टाइप के जो earrings हैं ये usually लहंगा पे बहुत अच्छे लगते हैं। See, as you can see, अगर आप ऐसे हैवी टाइप के इयररिंग्स साड़ी पे पहनने जाओगे तो इट विल नॉट मैच अ बिट। एज यू कैन सी दैट ऑन साड़ी इट्स नॉट गोइंग दैट गुड, बट if you are going to wear such kind of earrings on lehengas, you are going to rock. And the next one I have is really trendy. Okay, these are like long earrings and ये बहुत ज़्यादा trend में है अभी and such type of earrings I think they look cool on mostly gowns. इस type के जो look वाले earrings हैं these are some kind of party look. इस type के earrings हमेशा एक party look देते हैं, so these are mostly preferred on evening gowns. And these are the next ones because oxidized jewelry के बिना तो collection complete ही नहीं होता है, right? So again, I think this is the longest earrings that I'm having. Okay, these are like till here, but obviously it gives you a very very nice look. ये बहुत अच्छा look देता है.
On this, all you need to wear is simple oxidized jewelry wala hi koi bhi choker piece. You can wear just a choker piece on this, and these usually are worn on kurtis as well. Okay, you can prefer it on kurtis. And hairstyle, so I think a pony suits this earrings a lot, because अगर आप इस टाइप के इयरिंग्स पे अगर बाल खुले रखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा आपके बाल कैसे उलझे हुए आपको निकालने हैं. Okay, so I think that yeah, now it's visible. A high pony will suit this such kind of earrings a lot. Okay, so as you can see, tie a high pony on this, and this is the side look. Now I have the can see इस पर एक ब्राइड बनी हुई है. So these are the earrings specially meant for new brides. These earrings you can usually wear on sarees, because ये usually साड़ी पे पहनने चाहिए इस टाइप के earrings, because they give a very nice look. And usually on red sarees you can prefer such type of earrings, or it may be yellow in color. Okay, so have very beautiful jhumkas. These are usually worn on silk sarees. See, as you can see, it give a very rich look, and you can wear any kind of simple pendant on this. आप कोई भी एक नॉर्मल सा पेंडेंट पहन सकते हो इस पे. See, last but not the least, okay, this is the last earring, because मैं एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ. These are also really pretty. Okay, these are matching earrings of a pista shade. झुमरीज है. Okay, I मतलब usually prefer to have all kind of variety. ठीक है, यूजुअली आप जब भी कलेक्शन करना शुरू करते हो तो ट्राई आउट कि आप हर वैरायटी अपने पास रखो, जैसे कि झुमरीज है. ओके, लाइक या दिस द लुक. And these types, again a tip, that these types are look more good only when you are wearing a matching sari. Try to have collection of some of the colors of your earrings जहाँ पे most of the colors are common, जैसे कि peach color and this pista color are the most common color dresses we find in the market. Okay, like I have pista shade में मेरे पास ये है. Now I don't want to drag the video much more, so I'm not wearing this and showing to you guys, but you can see, have a look. Like ये मांग टीके के साथ है. Okay, I'll just open it and show. Okay, now it's much more clear. Okay, so that's it for this video. I hope that you enjoyed watching it and आपको कुछ, and I'm sure that you have got some of the ideas in your mind whenever you're going to next collect all the earring kind of stuff for you, right? So this was my traditional earring stuff, and I do have the western stuff even, and I'm going to make a video on that even soon. ठीक है, वो वाला part भी मैं जल्दी लाऊंगी. And yes, that's it for this video. Do like, share and subscribe. Bye bye.